Hello everyone. So today we are beginning with the very first lecture of harmonic analysis और आज हम पढ़ने वाले हैं what is actually a topological group. So as the name suggests that first of all it is going to be a group. Secondly, it is going to be a topological space. And third, both of these must be compatible. So for the compatibility, we take this multiplication map from G cross G to G, where this A comma B is mapped to A star B. Now what is this star? This star is the operation with respect to which the group the set is a group. Okay, so इसे हम बोल सकते हैं simply the binary operation of the group G. And first of all, this multiplication map and the inclusion map, which goes from G to G, sorry, inversion map, which goes from G to G, where A is mapped to A inverse. So these maps they both must be continuous. Okay, so this is the definition of a topological group. That a topological group is a group which is a topological space such that the multiplication map and the inversion map, this is called as the inversion map, because यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स पे मैप कर रहे हैं. अब इन्वर्स आप समझते हैं ना, ये इन्वर्स वही ग्रुप में जो इन्वर्स होता है एक एलिमेंट का, उस पे मैप हो रहा है. And multiplication, we are calling it to be multiplication, but it is denoting the operation star of the group G. Okay, so they both must be continuous, and then we say कि जो group G है हमारे पास, that is a topological group. All right. Okay. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि since we have now developed, we know that what is a topological group. Let's have a look at some examples. Okay, we will be proving them that they are topological groups. So let us take the very first example. So if I take any group G with discrete topology, it is a topological space. Can you think why? क्यों एक कोई भी अगर मैं ग्रुप ले लूँ, any arbitrary group that you know, and if I take with it the discrete topology, ना discrete topology जिसमें सारे subsets of G क्या होंगे, open sets होते हैं, तो इनके साथ ये बेसिकली एक topological group बनेगा. ओके, सो मुझे क्या प्रूव करना होगा इसके लिए? मुझे दिखाना होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन मैप जो मैं डिफाइन करती हूँ, विच इज़ अ मैप from G cross G to G. So let me take a nice color, which is dark. Okay. So I need to show that multiplication map, which is from G cross G to G, and the inversion map, which is from G to G, here where A comma B is mapped to A star B, or we can write simply AB, and here A is mapped to A inverse. Okay, so they both must be continuous. Okay, तो देखो continuity in what sense? Continuity in the sense
वी डिफाइन इन टोपोलॉजी, वी नो ना कि एक फंक्शन, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम अ स्पेस कैपिटल एक्स टू अ स्पेस कैपिटल वाई, इट इज कंटिन्यूअस if and only if for every open subset, अगर मैं कोई भी ओपन सबसेट उठाऊं जो कि y में ओपन है, उसकी इनवर्स इमेज f इनवर्स, वेट अ सेकेंड, ओपन सबसेट लेना है, सो you may confuse it with the group. I'm not talking about the group right now. मैं in general topological space में कैसे काम करता है वो बता रही हूँ. So f inverse of u is open in x. We know this. मतलब हर एक open set की जो प्री इमेज है वो open होनी चाहिए. दिस इज वट आई हैव, है ना. तो उस सेंस में हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा कि ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन मैप और जो मेरा इन्वर्जन मैप है ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे. ठीक है, तो इससे हम कैसे देख पाएंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो यू नो कि G क्रॉस G क्या है. ये है प्रोडक्ट ऑफ topological space G. So it is basically G cross G. ठीक है, और इसके ओपन सेट्स होते हैं ऑफ द फॉर्म U क्रॉस V, जहाँ पे U and V दे आर ओपन इन G. ठीक है, दिस इज बेसिकली इट इज जनरेटेड बाय दीज टाइप ऑफ सेट्स. ये इसका बेसिस बनाता है. ओके all right. Okay, now as G is having the discrete topology, तो अगर आप सोचो मैं कोई भी U विच इज़ अ सबसेट ऑफ G लेती हूँ. ठीक है, ओवर हियर इफ आई टेक एनी सबसेट U ऑफ G, then what will be its inverse image? M inverse of U. So it will be simply U cross U. Now U is open in G, this U is again open in G, so product topology में this U cross U is open, yes or no? So what I am getting is that the inverse image of any open set that I take in the codomain part, so that I am getting it to be open in the domain part. Okay, why? Because we have associated G with the discrete topology, so because of that we are getting this. Okay, similarly if I take any open set over here, okay, say U, then I inverse of U, it will be U inverse. But one thing which should be noticed over here is this is associated with discrete topology, yes or no? G is having the discrete topology. If I take any subset U of G, I inverse of U will be a subset of G only. और क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो सबसेट ओपन हो जाएगा और इस वजह से दिस इन्वर्जन मैप विल बी कंटिन्यूअस. ओके, सो वी हैव सीन बोथ कि मल्टीप्लिकेशन मैप भी कंटिन्यूअस हो रहा है और इन्वर्जन मैप भी कंटिन्यूअस हो रहा है. ठीक है ना. और यहाँ पर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सिमिलर वे में जैसे हमने इन्वर्जन मैप में देखा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ओपन सबसेट लेती हूँ U ऑफ G, तो उसका जो इन्वर्स इमेज होगा, सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म से सम arbitrary W1 cross W2, जहाँ पे W1 a subset of G, again W2 a subset of G. Now they both are associated with the discrete topology. ठीक है, तो W1 will also be open
and W2 is also is open in G, and hence this W1 cross W2 is open, being a basic open set. ठीक है, so this is very trivial, मैं इतना समझा रही हूँ, which is definitely not needed, because you can understand कि ये सब trivially follow up होता है once we know the fact that G is associated with the discrete topology. All right, now let us have a look at the second example. So first say it can easily follow up that any finite group is a topological space. Any finite group is a topological space. Why? Because we can take the discrete topology with that group. Okay. Now, example number 3 is R with the usual topology. Okay, so as a group we are considering right now R with respect to addition, and as a topological space we are considering R with respect to the usual topology. Okay, so this is also a topological space. Okay, so what do we need to justify? We need to justify just the continuity of the multiplication and the inversion map. Okay, so we know multiplication map goes from G cross G to G. Here it goes from R cross R to R. So let me write it specifically. So it is a map from R cross R to R such that any tuple AB will be mapped to A. Here the operation is plus, so A plus B. Okay, so यहाँ पर जो continuity हमें show करनी है, so that I will prove with the sequential criteria. So if I take a sequence, say AM BM, which is converging to the point A, B, ऐसे तो हम प्रूव करते हैं कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करने वाली अगर मैं कोई सीक्वेंस लूँ तो when I apply M on it, that must converge to the image. Yes, then I say that this map is continuous. Okay, now as we know that the convergence in R2, so this is basically going to be a sequence in R2, and we know कि Rn में in fact, ठीक है, for any n in natural number जो convergence होती है वो coordinate wise convergence होती है. Either you can use this fact or I can give you one more result, ठीक है, and that is that if you have a, we'll be using this result, that if you have a topological space, in a topological space, product space है ये, x cross y, if you have a sequence say xm ym which is converging to x comma y, so that holds if and only if this sequence xm converges to x in capital X, the sequence ym converges to y in capital Y. Okay, this is a very important result. प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जो कन्वर्जेंस होता है अगेन वो कोऑर्डिनेट वाइज कन्वर्जेंस होता है. सो क्योंकि हम R2 को एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी देख सकते हैं ऑफ R विद R, यस और नो? ओके, सो इस वजह से वी कैन बेसिकली अप्लाई द रिजल्ट दैट if I have taken the sequence AM BM converging to A comma B, so this implies the first sequence converges to first coordinate, the second sequence converges to the second coordinate. So I have AM converges to A and BM converges to B, so these are the two sequences in R convergent to some points AB in R. So that means AM plus BM
where this sequence will converge to, it will definitely converge to a plus b. So that means what I have showed is, if I apply m on these sequences, तो ये कहाँ जाके converge करती, इनके जहाँ भी ए एम कन्वर्ज करी है ए, और बी एम जहाँ कन्वर्ज करी है बी, टू ए प्लस बी जाके कन्वर्ज करती. सो हमने प्रूव कर दिया दैट इट कन्वर्जेस टू एम ऑफ ए कॉमा बी. ए प्लस बी इज नथिंग बट एम ऑफ ए कॉमा बी. हियर द ऑपरेशन स्टार इज प्लस. ओके, डोंट फॉरगेट. नाउ similarly we'll have a look at the continuity of the inversion map. Okay, so let us have a look. So you know what inversion map will go from R to R where any element is mapped to its inverse. So let us take a sequence AM which converges to A in R. मुझे प्रूव क्या करना होगा? Here A inverse, क्योंकि R with respect to addition है, so I should be writing minus A instead of A inverse. So I basically want to show that this minus am sequence converges to minus a, and that follows from the results that we have studied in real analysis. So that means IAM converges to IA. And what does that means? If I am taking any arbitrary sequence AM which is converging to A, okay, what I am getting, IAM converges to I of A. So this implies that I and from above M, they both are continuous, and hence हमारा third example is done, that R with respect to addition this group is a topological space. So I'll be using TS for the same. Mark it. Okay. हम आगे बढ़ते हैं with the third example. So obviously, as we have studied that R with respect to addition is a topological group, तो इससे थोड़ा सा हम सिमिलर ही देखेंगे कुछ, है ना. दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल 4. अब आप यू विल बी वंडरिंग सिमिलर कैसे हुआ, तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. सो वी आर लुकिंग एट द एग्जाम्पल MNR सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस. ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट n क्रॉस n मैट्रिसेस. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इन्वर्टेबिलिटी वगैरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जितने भी n क्रॉस n मैट्रिसेस with entries from R, so we are considering that. Okay, now is it a group? So definitely we know कि MNR is a group, ठीक है, and that too with respect to addition. So yes, it is a group. Okay, अब बात आती है कि टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे बनेगा. ठीक है, so you must be knowing कि MNR को मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ with Rn square. Let's say for example I have a 2 cross 2 matrix. Okay, so this is A11, A12, A21 and A22. This can also be observed as like this: A11, A12, A21, A22. So what is this? This is an element of R2 square. So that is nothing but R4. ये एक एलिमेंट है, एक टपल है R4 का. तो इसका मतलब कोई भी अगर मैं मैट्रिक्स लेती हूँ जो कि 2 क्रॉस 2 की है, उसको मैं एज एन एलिमेंट इन R4 देख सकती हूँ. सो इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n ऑर्डर की है, उसको मैं एज एन एलिमेंट इन Rn स्क्वायर देख सकती हूँ. And in this way it is also related to the example 3.
तो एग्जाम्पल 3 में जैसे हमने R देखा, तो अब हम यहाँ पे Rn² देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें Rn² की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास MnR था, ठीक है, सो ये एक ग्रुप तो था पर ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं था. It was a group with respect to addition, but it is not a topological space. Now, in order to make it topological space, मुझे ये fact use करना होगा that I can identify their elements as elements of Rn². The moment I have this result, I can use the topology that I use on Rn². Rn² पे कौन सी topology होती है? We can consider it to be either the Euclidean topology, metric topology or the product topology. ठीक है, they both basically coincide. So now my MnR with respect to addition, this space is not only a group, it is a topological space also. ठीक है, when I identify it with Rn². Okay, now I need to look at the continuity of multiplication map. So here we are going from MnR cross MnR to again MnR, such that M of A comma B is equal to A plus B. Okay, so again sequential criteria use करेंगे, and here let me write inversion के लिए भी. It is from MnR to MnR, where I of A is equal to minus of A. Okay, now let's have a look. So let us take a sequence of matrices. Obviously now I'll be considering AM BM, which is convergent to the point A comma B. Okay, in MnR cross MnR. Now again using the above result कि topological space में कोई sequence xn by n xy पे converge करती है if and only if there is coordinate wise convergence. So from that result I get AM must converge to A and BM must converge to B. So AM matrix A पे मतलब AM sequence A पे converge कर रही होगी और BM B पे converge कर रही होगी, ठीक है। पर अब आप ध्यान दो, AM कोई एक मैट्रिक्स है जो कि MnR में है, AM एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स है जो कि स्पेस के अंदर है, जिसे हमने Rn² से आइडेंटिफाई किया है. और Rn² में you must be knowing that the convergence is actually what? Coordinate wise convergence. Yes or no? The convergence is actually coordinate wise convergence. So जाहिर सी बात है कि अगर मैं AM का ijth coordinate देखूं, if I have a look at AM ijth coordinate, then it converges to Aij for all I comma j lying between 1 and n. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास पूरी सीक्वेंस है, लेट्स से अगर ये amth टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है, with A11 let us write M, A12 let us write M, and so on, and it is convergent to a matrix A. So जो मैट्रिक्स A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होने वाला है, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट ये जो मेरे पास A11M वाली जो सीक्वेंस है, वेयर M इज रनिंग फ्रॉम 1 till infinity, ये सीक्वेंस R में जहाँ भी कन्वर्ज करती है से A11, सो वही इस A मैट्रिक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा.
रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब हम आर एन स्क्वायर में सीक्वेंस का कन्वर्जेंस देखते हैं तो वो कन्वर्जेंस होता है कोऑर्डिनेट वाइज कन्वर्जेंस, इन द सेंस दैट इफ आई हैव अ सीक्वेंस, let's say in Rn, okay, Rn square ही ले लेते हैं, let's say. So if I have x1m, x2m, and so on, it will go till xn square m. ठीक है, so this sequence converges to x1, x2, so on till xn square if and only if for all I, this xim sequence will converge to xi in R. Okay, and this is for all I is equal to 1, so on till n square. Okay, so from that result, basically you can prove this result. It is very easy to prove. From this result I get this part, that AMIJ one minute, do it again. Yeah, it's fine. Okay, so from this part I get that AMIJ, so that means basically if I consider any ijth coordinate, so that will be convergent to A matrix का ijth coordinate. Okay, so all right, so इस वजह से एंड सिमिलरली वी विल गेट, क्योंकि बी एम सीक्वेंस बी पे कन्वर्ज कर रही थी, तो बी एम आई जे कोऑर्डिनेट सीक्वेंस must be convergent to Bij. So from that if I take, okay, so मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या प्रूव करना है कि जो ए एम प्लस बी एम सीक्वेंस है वो ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट होनी चाहिए, राइट? So as I know that AM is convergent to A and BM is convergent to B, I really don't need this much, but ये next example में हमें help करेगा, क्योंकि AM is convergent to A and BM is convergent to B. ये कैसे आया था? वो result topological space वाले result से follow up हुआ है, ठीक है? So it would imply that AM plus BM will be convergent to A plus B, and similarly minus of AM will be convergent to minus of A. So इससे हमें पता चलता है about the continuity of the multiplication, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया कि M of AM, BM is convergent to M of A, B, और second हमें मिल गया कि M of AM, sorry, not M, that I of AM is convergent to I of A. All right, अब एक लास्ट एग्जाम्पल, अगेन अब जैसे हमने मैट्रिसेस में प्लस में देख लिया, ठीक है? अब नाउ लेट अस हैव अ लुक GLNR, जो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाता है एक ग्रुप. सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन MNR जिनका डिटर्मिनेंट, we can write it like this, is non-zero. That means we are considering set of all invertible matrices. So we know that GLNR with respect to multiplication, matrix multiplication, is a group and it is a topological space. Why? Because
we can again see it as a subset of MNR, and MNR can be identified with Rn square, and this Rn square is a topological space, so it is also a topological space. So GLNR एज अ सबस्पेस ऑफ MNR देखा जा सकता है, और इसलिए ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. ठीक है, सो दिस हैज subspace topology from MNR. Okay, so it can be seen as a topological space also. Now we need to justify the continuity of the multiplication map. So here M goes from GLNR cross GLNR to again GLNR, such that M of A comma B is mapped to AB. Here the operation is product, and the inversion where I of A is mapped to A inverse. Okay, यहाँ पे I should be writing equal to sign instead of this. Okay, now we need to check the continuity. So again, sequential criteria. Let us suppose we take any arbitrary sequence AM BM convergent to A comma B in GLNR cross GLNR. Now using that result, topological space वाला, ठीक है, क्योंकि GLNR क्रॉस GLNR एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, so this must imply that AM must converge to A and BM must converge to B. That means there is coordinate wise convergence. And okay, ये जो चीज मैं आपको ऊपर बता रही थी, okay, the thing which I discussed above, कि अगर AM A पे कन्वर्ज कर रहा होता है, तो अगेन क्योंकि इट इज़ अ सीक्वेंस इन Rn स्क्वायर, है ना, एंड Rn स्क्वायर में वी नो देर इज कोऑर्डिनेट वाइज कन्वर्जेंस, सो दैट मीन्स दिस विल बी कन्वर्जेंट टू Aij, एंड BM का जो ijth कोऑर्डिनेट है, सो दैट विल बी कन्वर्जेंट टू Bij, राइट. सो हेयर हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना होगा कि AM BM is convergent to AB. यही तो होगा ना बेसिकली. what do we need to prove? M of AM BM is convergent to M of A comma B. So AM BM product of these matrices is convergent to AB. Okay. Now let us have a look at the ijth coordinate of AMBM. अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इसका ijth coordinate इसके ijth coordinate के बराबर है, तो I will be done. क्योंकि AMBM बेसिकली एक मैट्रिक्स बनती है. लेट्स से मैं इसे CM मैट्रिक्स बोल रही हूँ, ठीक है. तो ये अब मेरे पास सीक्वेंस आ जाता है जो कि R एन स्क्वायर में ही है. देखो M यहाँ पे mth एंट्री है या mth टर्म है सीक्वेंस की, ठीक है. इट इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस n क्रॉस n ही है. सो इसलिए ये सारी सीक्वेंसेस कहाँ बनेंगी, Rn स्क्वायर के अंदर बनेंगी, ठीक है. सो एंड जैसे कि अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि
ए भी एक आर एन स्क्वायर की ही टर्म है ना? और आर एन स्क्वायर में कोई सीक्वेंस किसी टपल पे अगर कन्वर्ज कर रही होती है, सो इफ एंड ओनली देर इज अ कोऑर्डिनेट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है? सो इस वजह से इफ आई एम एबल टू प्रूव इतना दिस मच कि आई जेथ कोऑर्डिनेट इसके आई जेथ कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ज कर रहा है, देन आई विल बी डन. ओके, सो ए एम बी एम का जो आई जेथ कोऑर्डिनेट है, it can be expressed as a I k m b k j m, where k is running from 1 till n. Why? Because if I write, let's say this is a m matrix, okay, a11, a12 and so on, there will be the ith, है ना, ith row also. So a11, a12 and jth column. So this is a1j m, okay, and so on. There will be some ith row and there is some jth column. Ith row will be of this form: ai1, ai2 and some aij and so on. And similarly we have this B matrix, okay, B11, so on. Here I need only this jth column, so let me emphasize on this. It is B1jm, B2jm and so on. अब जैसे प्रोडक्ट में कोई भी ijth एंट्री होती है, सो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो विद द jth कॉलम, ठीक है? मुझे ijth एंट्री चाहिए तो मैं ith रो को jth कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है? सो आई पिक द ith रो and I multiplied with the, oh I'm so sorry, 1 minute. I pick the ith row and I multiplied it with the jth column, ठीक है? सो यही मैंने किया यहाँ पे. when I am writing this, ith row है तो ai1 with b1j हो जाएगा, है ना? then ai2 with b2j हो जाएगा. so that is, उसी को बेसिकली मैं k से वेरी कर रही हूँ यहाँ पर. so what I am getting is this thing, okay? Now if I let key aik in, let's say, मान लीजिए अब ये भी जो aik है एक सीक्वेंस है ना, R में aik m, where m is running from 1 till infinity. अगर मैं मानती हूँ कि let's say ये ai k पर जाकर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? for k is equal to 1 to so on till n, okay? And if I let this sequence bkj m, where m is running from 1 till infinity, is convergent to say bkj again for k equal to 1 to so on till n, then we can say that this am bm ijth entry will converge to, क्योंकि वो उसमें सिग्मा था ना, so we will have sigma aik bkj where k is running from 1 till n. actually जो हमारे पास सीक्वेंस थी they were of the form this, ठीक है? अब प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस का लिमिट पॉइंट जो होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है ना. सो आई एम सेइंग दैट फ्रॉम के रनिंग फ्रॉम 1 till n, ये बेसिकली किस पे कन्वर्ज करेगी? इस पे ए आई के बी के जे वेयर के इज रनिंग फ्रॉम 1 till n. लेट मी राइट सिंस, ओके? सो दिस इसका जो ijth कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे जाके इस एंट्री या इस एलिमेंट इन R पे जाके कन्वर्ज करेगा, ठीक है? बट व्हाट आई सी दैट दिस इज
equal to the ijth entry of A into B प्रोडक्ट मैट्रिक्स. ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है कि ये ijth एंट्री है ऑफ दिस प्रोडक्ट मैट्रिक्स. सो व्हाट आई एम गेटिंग दैट दिस am pm सीक्वेंस का ijth coordinate is converging to AB का ijth coordinate, and that implies AM BM convergent to AB. And on similar terms, one can prove, similarly, one can prove AM inverse. If I will take, it will be convergent to A inverse. Okay, you can try. So this was all. Okay, so here what we studied, let me give a recap. So हमने सबसे पहले देखा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस हम किसे कहते हैं, और विच इज़ अ ग्रुप. टोपोलॉजिकल ग्रुप हम किसे कहते हैं. So a topological group is a group which is a topological space, and with respect to which the multiplication map and the inversion map are continuous. Okay. Then we had a look at some examples. सबसे पहले हमने देखा किसी भी ग्रुप को अगर मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ लेती हूँ, इट इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस. सेकेंड हमने पढ़ा अगर मैं कोई भी फाइनाइट ग्रुप लेती हूँ, देन इट इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, सॉरी टोपोलॉजिकल ग्रुप. ओके, और फिर हमने क्या पढ़ा, that R with respect to addition is a topological group. Next हमने पढ़ा कि set of all matrices MNR with respect to addition, this is a topological group. फिर हमने देखा at last GLNR with respect to multiplication, this is a topological group. So हमने 5 examples देखे of topological group. Okay, so we end this lecture here.